चैट ऊपर कर दें। सही बात है जी, आज सारी दुआ करें ट्रम्प जीत जाए। अच्छा, आर यू फॉलोइंग द इलेक्शंस? आपको इलेक्शन का मेथड इंटरनेशनली में आ रहा है, अल्लाह का शुक्र सलाम, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से बड़ा रेलेवेंट है वो इलेक्शन कैसे होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। दैट्स इंपॉर्टेंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नहीं नहीं, आसान ये पढ़ेंगे उस वक्त जाके। मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप खुद पढ़ें आप लोग, मैं बाद में जाऊँगा, अभी समझ नहीं आएगी जी। इलेक्ट्रल कॉलेज मेथड, ट्रम्प जीत जाए, अल्लाह करे ट्रम्प जीत जाए, मेरी तो दुआएं उसके साथ हैं, ये दुनिया भर के लिए बेहतर है। मैंने शेयर किया था लिंक, ओके ग्रेट, दैट्स ट्रू आयशा, दैट्स ट्रू। इंशाल्लाह ट्रम्प जीतेगा। जो दिन मुझे भी नहीं पता, उसने कहा सर आपने शेयर किया, तो मैंने कहा मैंने कर दिया होगा। I don't know, Amsha. Why Trump? It's because he's a good guy. He's an honest man. हमजा तो ज्यूज जिसके साथ होंगे तो क्या हम वो काम नहीं कर सकते? ज्यूज टीवी भी देखते हैं तो हम भी तो टीवी देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। बेसिकली जी, यस, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन एंड ही मीन्स बिजनेस, ठीक है। ही इज नॉट अ हिपोक्रेट, ही डजंट प्ले, ही एक्चुअली टेक्स डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस। एंड अगर ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप ह्यूमन राइट्स में तो खैर ओबामा भी इतने वो नहीं है, सच कोई पॉपुलर नहीं है इस सेंस में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो सारे करते रहे, ट्रम्प ओबामा के ज़माने में ड्रोन स्ट्राइक से आप लोग मरते रहे। बट द पॉइंट इज, जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स, ऑल्दो उसको अनसर्टेनिटी ज़रूर है, बट ही इज अ स्टेट। वो कल जो कहा इमरान खान साहब ने अगर इंटरव्यू में कहा, अगर आपने जर्मन टीवी को देखा हो, उन्होंने इमरान खान ने कहा मैं और ट्रम्प जो है, ही लिटरली सेड दैट आई एंड ट्रम्प वी आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ पीपल, वी आर अनकन्वेंशनल। एग्जैक्टली अमीर हमजा, एग्जैक्टली। और आई मीन they are unconventional politicians, they're not politicians as such, they're populist leaders, and populist leaders behave differently. Yes Umar, absolutely agreed. But anyhow, let's move जी, चलते हैं हम। पेपर में सवाल 20 नंबर का पॉलिटिकल साइंस में नहीं आ सकता, 20 नंबर का सवाल नहीं आ सकता। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के वाले से या पॉलिटिकल साइंस के वाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जेरेमी बेंथम की, राइट? बेंथम खत्म तो नहीं किया था? जेरेमी बेंथम, ये डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1832 है, कंफर्म करिएगा। डेट ऑफ बर्थ और डेथ 1832 है, ओके। 1740। यस उमर, एब्सोल्युटली। बेंथम की किताब का नाम यहाँ पे जी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। बेंथम का जो बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन की थ्योरी है। बेंथम ये कहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है, जिसपे सवाल आता है यूटिलिटेरियनिज्म है या पेन प्लेजर थ्योरी, दोनों में से आते हैं। और हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था, बेंथम गेव दिस थ्योरी बिकॉज ड्यूरिंग हिज टाइम्स एंड बिफोर हिम द पावर वाज शिफ्टिंग टू द पार्लियामेंट। पावर पार्लियामेंट के पास शिफ्ट हो रही थी। व्हेन द पावर वाज शिफ्टिंग टू द पार्लियामेंट, तो उससे पहले जब बादशाह के पास थी, किंग यूज्ड टू मेक लॉज
that appeased himself. He used to make laws for himself. And he would say that the source of law is God. And if the source of the law is God, then you can't question it. And because source is pure, therefore it will have a positive impact. But Bentham, like those who favored parliament's powers, they belong to enlightenment. They thought that governing state should be done using rationality, and the matter between God and man is the matter related to religious affairs only. On worldly affairs, the people must look up to their own rationality and their own argument. तो बेंथम ने जब पावर पार्लियामेंट पर शिफ्ट हुई, he has to make sure that the new principles or the basis of law should be introduced. So source के बजाय उसने कहा the utility of the law, the quality of the law, the value of the law depends upon not the source but its impacts. इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. So Bentham gave the theory of utilitarianism because of the geopolitical environment of Europe at that time, in which powers were being transferred to the parliaments, and parliaments were not having any clue what should be the basis of their law. बादशाह को तो बड़ा क्लियर था, लेकिन पार्लियामेंट किस बेसिस पे लॉ बनाएगी, they had to keep in mind what factors. ये फिर आ गया बेंथम की थ्योरी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेयर और थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. लेट मी नाउ एक्सप्लेन. अब हम थ्योरी पे जाते हैं. आई होप ये बैकग्राउंड आपको आइडिया हो गया होगा. ओके, लेट्स मूव टू द थ्योरी. जब आप थ्योरी शुरू करेंगे तो यू विल बिगिन थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. द यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस, जो हमने बात कर चुके हैं, वैसे हमने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं. द यूजफुलनेस, द बेनिफिट, द इम्पैक्ट्स, द एडवांटेजेस दैट समथिंग कैन गिव, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी सेज, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज दैट a law must be judged as good or bad law if it has some utility or not. If a law has utility, then it's a good law. If a law has no utility, no benefit, then it should be discarded. Now the question is, what is utility itself? How we link with it? The idea is, does a law serve the purpose of the masses? If yes, it's a good law. If it does not serve the interest of the masses, it's a bad law. So the goodness and the badness of the law comes from how it impacts the people and not on the basis of its sources. This line is what we call the utilitarianism or the principle of utility. The quality of the law must be judged from the impacts it has on the population. Now the question is, what kind of impact people expect? लोग क्या चाहते हैं? ऐसा ला जो लोगों को सर्व करे, लोगों की क्या चीज सर्व करे? उनकी इकोनॉमिक नीड्स, उनकी पॉलिटिकल नीड्स, कौन सी नीड्स उनकी सर्व करे? Then Bentham goes deep into it, and Bentham says that human nature ये तैमूर दोबारा आएगा अभी. Bentham begins his theory by explaining human nature, and he says that man is under the control of two masters. ये वर्ड उसके अपने. Bentham says that man is under the control of two masters, pain and pleasure. These two instincts control human behavior. आपका, मेरा, human behavior, हमारी nature, इसको control करते हैं हमारे अंदर दो चीजें, pain and pleasure. They control humans. उसने वर्ड यूज किया मास्टर का. मास्टर क्या करता है? It dictates, it decides. So we are the slave to these two things, pain and pleasure. वो कहता है humans
every individual wants to gain the pleasure and wants to avoid the pain. Everybody likes to have pleasure and they like to avoid the pains. ऐसा ही होता है हमारे माशरे में. कोई बंदा अगर पेन लविंग हो, if somebody likes to have pains, हम उसको साइको नहीं कहते. मुझसे कोई बंदा ऐसा हो जो कहे कि आई लाइक पेन एंड आई डोंट लाइक प्लेयर, वो हंसना भूल जाए, वो करना भूल जाए, हम उसे नॉर्मल इंसान नहीं कहते. वी डोंट कॉल सच अ पर्सन एज अ नॉर्मल पर्सन. सो द पीपल लाइक प्लेयर एंड दे अवॉइड पेन. जुल्फकार वो तो हमारी माशरे का मसला है ना स्पेशली, बट उस पर नहीं जाएंगे ज़रा प्लीज. बट पीपल लाइक टू अवॉइड पेन्स, पीपल लाइक टू गेट प्लेयर्स. आप सारे अपने अपने कैसे सुना रहे हैं, मैं आपकी किस्मों की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल जनरली बात कर रहा हूँ, एज अ होल माशरे की बात कर रहा हूँ. नाउ प्लेयर्स और जो पेन्स हैं ये बेसिकली इन्हीं के तहत हमारे सारे एक्शंस होते हैं. जी उमर एग्जैक्टली. अच्छा तो प्लीज इसको तो सुनिएगा, ह्यूमन नेचर को सुनिएगा, फिर मैं यूटिलिटी पे दोबारा आऊंगा. यूटिलिटी पे मैंने दोबारा आना. ह्यूमन नेचर में दो मास्टर्स हैं जो इंसान को डिक्टेट करते हैं बिहेवियर को. डिजायर फॉर प्लेयर एंड डिजायर फॉर अवॉइडिंग पेन्स. गेन प्लेयर, अवॉइड पेन्स. ही सेज people like to maximize their pleasures and they like to minimize their pains. They take steps. हम छतरी लेते हैं, हम तमाम सारा प्रिंसिपल जो करते हैं, तमाम आइडिया चीज़ें डेवलप करते हैं, हम तमाम जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो इस बिना पे होती हैं what gives us pleasure, what gives us pain. We avoid everything that gives us pain. अच्छा अगला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट. बेंथम कहता है that जो इंसान हैं उनके दरमियान में जो सेंस ऑफ गुड एंड बैड है, द सेंस ऑफ गुड एंड बैड, इट इज एक्चुअली द सेंस which is derived from pain and pleasure. So man has the sense of good for something that gives him pleasure. If anything gives me pleasure, it's a good thing. And if anything gives me pain, it's a bad thing. So from pain and pleasure, he moves on to explain the concept of bad and good. Good is what pleasures, pain is, bad is what gives me the pain. Simple सी लॉजिक है. वैसे आपको क्या लगता है? What do you think? Is it not true that we consider something good that gives us pleasure? वो pleasure होती है. It happens. अच्छा, और जो चीज हमें पेन करे, usually we call it a bad thing. Not always, but true. But we call it a bad thing because sometimes it gives us a pain. Now the point is, the people's sense of good and bad is derived from pain and pleasure. That's it. बिल्कुल हो सकता है अलग, लेकिन गुड और बैड अलग होगा. मेरे नजदीक गुड वो चीज होगी जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे, जो मुझे प्लेजर दे. If something pains me, I will rarely call it a good thing. It's a simple idea. Now, Bentham ये कहता है good और bad correspond to pain and pleasure. उससे correspond करते हैं. Pain is bad, pleasure is good. That's the sense of it. लोगों के नजदीक morality क्या है? The morality is the selfish pleasure, the selfish pain. If something pains you, उसके नजदीक गुड है ज्यादा, आपके नजदीक गुड नहीं है ना. उस बंदे के नजदीक गुड क्या है? इफ ही कंटिन्यूज टू गेट द ड्रग्स, इट्स गुड फॉर हिम. अच्छा, नॉट सिंपली. अब दो पर्सन को कंपेयर नहीं करें, अपने इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं. मेरे नजदीक, हम सिर्फ इंडिविजुअल को देखेंगे. मेरे नजदीक अकॉर्डिंग टू बेंथम, मेरे नजदीक गुड का मयार क्या होगा? उसके नजदीक वो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल कंसिडर्स गुड अ थिंग दैट क्रिएट्स प्लेजर्स. So good is what pleases them, and bad is what pains them. It's simple logic.
दूसरे को अच्छा लग रहा है, बुरा लगे, तीसरे की अंदर बात ना करें, फॉरगेट अबाउट देम, इट्स ओनली अबाउट द टू पीपल। चैट सामने करिए। नाउ पेन और प्लेयर को जो सोशियोलॉजिकल सेंस में जब जाते हैं, उसकी सोशल साइंस में जब जाते हैं, उसकी सोशियोलॉजी में जब जाते हैं, तो उस सोशियोलॉजी के अंदर हमें मॉरल कोड जो नजर आते हैं, दे आर वेरी रिलेटिव, दे आर बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड, and each one of us defines good and bad on the basis of whether it pains us or pleases us. अब ये कह रहा है Bentham, this is what he is saying. Now, having said this thing, it is good or bad. If this good and bad is derived from pain and pleasure, तो इसका मतलब ये हुआ every human being wants to maximize the pleasures, which will be all good, and he will minimize the pains, which will be all bad. Thank you. So, yes, super ego. So everybody thinks that what pleases him is a good thing, and what pains him is a bad thing. So एक sociological sense बन गई, morality बन गई, good और bad को हम कोई universal standards में नहीं करते, बल्कि good और bad relative. That's the idea. There is no universal good, there is no universal bad. इसलिए तो जो ड्रग की एग्जांपल दी ऊपर, कोई ड्रग कर रहा है, इफ इट गिव्स हिम प्लेजर, वी आर फाइन विद दैट, पीपल डोंट स्टॉप देम। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे ही हमने ठेका लिया होता है ना, दूसरे को पता नहीं है, उसे मैंने बताना कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन बेंथम कहता है नहीं, हर इंडिविजुअल ने खुद डिसाइड करना है कि पेन क्या है, प्लेजर क्या है। दैट्स द प्राइमरी मोटिवेशन एग्जैक्टली। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, मैं लॉ के ऊपर बयान लगाऊं। अब बेंथम ये कहता है कि बिकॉज पार्लियामेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो दे विल हैव टू सर्व द पीपल। पार्लियामेंट्स अवाम की नुमाइंदा है, अवाम को ही उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, अवाम के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम, a law, the quality of the law must be judged from its usefulness. एक लॉ की क्वालिटी जज की जाएगी, यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल, from whether it promotes the public interest or not. The quality of the law must be judged by its impacts on the people, because democracy है, आवाम को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा आपसे सवाल यह है, what does public want according to Bentham? Player, what they want to avoid? Pain. So अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what will be a good law that creates pleasure, and what is a bad law which creates pain? Exactly. So parliaments, while making laws, need to keep in mind whether a law creates pains or pleasures among people. If a law creates pains, it's a bad law. So the quality of the law must be judged from whether it creates pleasures or it creates pains among the people. ये basic principle है, इसको हम कहते हैं principle of utilitarianism, the theory of utilitarianism. अच्छा, इससे एक सवाल ऊपर जो आमना ने कमेंट किया है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। क्वेश्चन इज कि क्या जो ह्यूमंस हैं, व्हेन दे डिटरमिन व्हाट इज प्लेजरफुल फॉर देम, व्हाट इज पेनफुल फॉर देम, वो डिसाइड करेंगे। तो इससे क्या लगता है आपको, बेंथम ट्रस्ट ह्यूमन नेचर और ही हैज अ मिसट्रस्ट फॉर ह्यूमन नेचर? आपको क्या लगता है वैसे इससे? It's a trust, yes. If I will determine what is pain for me and what is pleasure for me, it means Bentham trusts my understanding of it. He trusts it. So Bentham considers humans as rational,
as good people, Lockean concept believe करते हैं, rational हैं, वो choice बनाते हैं, they can calculate what is good, they can calculate what is bad, and then they prefer to go for good and they avoid the bad. तो पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे लॉ बनाए जो प्लेयर्स क्रिएट करें और पेन्स को अवॉइड करें. Now, having said this thing, now let's move toward the next point. इसी थ्योरी के अंदर चलते हैं. अब लॉ वाली बात तो क्लियर होगी. लॉ की क्वालिटी जज की जाएगी उसके इम्पैक्ट से, और impact that according to Bentham people want is maximization of the players and minimization of the pains. Now question is, what kind of pains? What kind of players? Then Bentham gives a list of 14 players and 12 pains. 14 players and 12 pains. A list of it. मुझे सारे याद नहीं होते, तो मैं इसलिए कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अंदाजा बताता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स इंक्लूड सेंस, वेल्थ, पावर, इमेजिनेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई 14 के करीब प्लेयर्स जो है वो देता है. मैं एक दफा रिपीट करूं. फॉर एग्जाम्पल, सेंस, द प्लेयर ऑफ सेंसेस, द प्लेयर ऑफ वेल्थ, पावर, पाइटीएस. और ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारी रीडिंग तमाम रीडिंग के अंदर मौजूद हैं. 14 प्लेयर्स आर गिवन बाय हिम. जी आपको पेपर में याद करने पड़ेंगे. अब ये आप कैसे याद करेंगे, ये आपका मसला है, बट यू हैव टू. एमिटी, यस, गुड नेम, पाइटी, इमेजिनेशन, मेमोरी, गुड, ये सारे प्लेयर्स हैं. अच्छा, बेंथम, कोई बंदा यहाँ पे लिख भी दे. थैंक यू जाजेब, आप कर रहे हो. हाँ, ट्राई एक्रोनियम्स. मुनीसा, ये ज़्यादा अच्छा है. ट्राई सम अनकन्वेंशनल वे. ही ऑल्सो प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ 12 पेन्स. 12 पेन्स भी बताता है. दोज पेन्स इंक्लूड अगेन, उसके अंदर अगर आ जाएंगे सेंसेस भी आ जाती हैं, इल नेम आ जाता है, बदनामी, एनमिटी आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, एक्सपेक्टेशन आ जाती है. तो डिफरेंट जो है वो पेन्स हैं. So Bentham provides a list of 14 players and 12 pains. वो कहते हैं state must make laws to maximize them and minimize them. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करेगा पढ़ने के बाद वो ये होगा, 7-8 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो पेन्स भी हैं, प्लेयर भी हैं. जैसे इमेजिनेशन है. इज इट नॉट दैट इमेजिनेशन और सेंसेस, ये कोई भी हैं, they create pains as well as pleasures? ऐसा नहीं होता क्या? Yes, it does happen. So sometimes something memory भी true, memory भी होती है sort of, यादें माजी अजाब है यार, ये वो एक परेशानी भी हो जाती है sort of, but it is also pleasure as well. Power भी true. So the point is, 7-8 जो है वो ओवरलैप करेंगे, बाकी सेम होंगे. सर, थैंक यू फॉर राइटिंग 12 पेन्स जी. Bentham wants the people, the state, to help people achieve those pleasures and avoid those 12 pains. अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बड़ा है इसकी थ्योरी का, इट इज बेस्ड ऑन हिज आइडिया कि हाउ टू कैलकुलेट पेन्स एंड प्लेयर्स. हाउ टू कैलकुलेट पेन्स एंड प्लेयर्स. तो एक फार्मूला देता है बेंथम जिसको कहते हैं फिलोसॉफिक कैलकुलस. Bentham provides a formula, a method to measure pains and pleasures. उस फॉर्मूला के अंदर he provides different tools, different kind of factors through which we can measure pain and pleasure. Different factors लेकर हम उसको pain and pleasure को measure कर सकते हैं. वो क्या factors हैं?
फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन्स, आज सुनिएगा पॉइंट आपको सही समझ आएगा. इंटेंसिटी मीन्स कि एक लॉ जो स्टेट ने बनाया है, how much intense player will it create, or if it is causing pain, how intense the pain is. So intensity of player, if it is higher, then that's a good law, and if the intensity of pain is higher, then that's a bad law. But let's suppose state एक law बनाती है, let's suppose state एक law बनाती है और उस law के अंदर वो कहती है कि वो लॉ से एक्सपेक्ट नहीं करती है कि एक शॉर्ट टर्म लेस इंटेंसिफाइड पेन होगा बट ज्यादा नहीं होगा लोगों को. पीपल विल कॉल इट अ बैड लॉ बट इट विल नॉट बी एज बैड लॉ. बट इफ अ पेन इज क्रिएटेड विच इज ऑफ इंटेंसिटी, मेरा आपका सवाल पे मैं आखिर में आऊंगा, अभी नहीं, इस पे 2 मिनट बाद नहीं आऊंगा सवाल. आप इस क्वेश्चन को पब्लिक कर दें प्लीज. अच्छा, क्वेश्चन इज कि जो इंटेंसिटी है किसी भी पेन की या प्लेयर की, दैट इज लाइकली टू डिटरमिन वेदर इट्स अ गुड लॉ और अ बैड लॉ. इफ अ लॉ क्रिएट्स मैक्सिमम इंटेंस प्लेयर्स, इट्स अ गुड लॉ, बट इफ इट क्रिएट्स इंटेंस पेन्स, इट्स अ बैड लॉ. So intensity of player is good, intensity of pain is a bad thing. So when you measure pain in player, you have not only to measure that there's whether it is player or pains, it has also to do with the intensity of it. Similarly, duration. Duration means that for how long a pain or player will last. पेन या प्लेयर कितने अरसे तक रहेगा, ये फैक्टर भी कहलाता है. दैट शुड आल्सो बी अ फैक्टर इन काउंट. फॉर एग्जांपल, अ लॉ क्रिएट्स प्लेयर फॉर शॉर्ट टर्म एंड पेन फॉर लॉन्ग टर्म. तो विच लॉ विल बी अ गुड लॉ? विल इट बी अ गुड लॉ? इट इज नॉट. अ लॉ दैट क्रिएट्स शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, लॉन्ग टर्म पेन्स, दे आर बैड लॉज. So it has to be a factor of duration, for how long a law will create players and for how long it will avoid pains. Accident. Accident means how much people are affected by pains and pleasures. Horizontally बात करते हैं. How many people are affected by pleasures or by the pains? क्या टीवी यहाँ से चली गई मेरे पास? हाँ सर, टीवी की स्क्रीन गायब हो गई है. अच्छा, कैमरा चल रहा है. ओके. सो मुझे आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रही होंगी जी, अभी कमेंट ना कीजिएगा, 1 मिनट में वो ठीक होता तब तक. नाउ बेंथम सेज दैट जो एक लॉ है वो कितने ज्यादा लोगों को प्लेयर क्रिएट कर रहा है या कितने ज्यादा लोगों को पेन क्रिएट कर रहा है. अगर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग प्लेयर्स, इट्स अ गुड लॉ. इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग पेन्स, देन दैट्स अ बैड लॉ. सो एक्सीडेंट में वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल आर पार्ट ऑफ द इफेक्टिव्स. उसके इफेक्टिव्स कितने हैं, पेन के या प्लेयर के? इफ player lasts for a longer period of time and it is applied to most of the people of the times, ज़्यादा लोगों पे अप्लाई होता है, then that's a good law. But if a law is made that creates pains in maximum number of people, then that's a bad law. So accident or horizontal factors must also be kept in mind while applying the theory of pain and pleasure. And lastly, purity. Purity means what is the possibility that one good law that created player will expand. Means that if a law is made which creates players and then that player replicates itself and creates more and more and more players, then that kind of law is a good law. So what are the chances
that a good law or a law that creates player will create more players from itself. So उसकी जो replication है वो कितनी ज़्यादा हो रही है. If there's a bad law and there are chances that that bad law will create more bad news, that one bad will lead to more other bad things, then that's a bad law. While if a law is a good law and it multiplies over the period of time, it creates more players later on, subsequently, then that kind of law is called again a good law. So ये चार मेन फैक्टर्स हैं जी, इंटेंसिटी, एक्सटेंट, ड्यूरेशन एंड प्योरिटी. और इन चार जो लॉज हैं, चार फैक्टर्स जो हैं, इनकी बुनियाद पे बेसिकली जो कैलकुलेशन होती है पेन ए प्लेयर की, दैट इज कॉल्ड फैलोसफिक कैलकुलस. So philosophic calculus is the formula through which it's a formula through which we can understand whether a law has is a good law or it's a bad law. We measure it quantitatively based on these 3 points, and this is the entire theory of Bentham's. आसान सी theory है, कोई मुश्किल नहीं है. ये फैक्टर, so 12 panes, 14 players. पहले यूटिलिटी का प्रिंसिपल, गुड एंड बैड का प्रिंसिपल, और फिर आपने ये कैलकुलेशन की बात की. Philosophic, what is the term philosophic calculus, Mariam? Philosophic calculus is a simple thing. It's a formula to measure pain in player. So this is all जी. I'm open to questions. हमारा का कमेंट क्वेश्चन था, मैं अगर उसका आंसर कर दूं. हमारा का जरा चैट पढ़ी करिए. Okay, isn't human nature to avoid restrictions? They don't want to abide by the laws, hence causing pain to people. While keeping in mind it is a relative term. ये बात कम उसने नहीं की ना, हमारा कि बेंथम ने बात नहीं की कि ह्यूमन नेचर जो है वो अवॉइड करना चाह रही है लॉज को. ऐसा नहीं है. वो कहता है ह्यूमन, इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात ही नहीं है, उसकी लिबर्टी की थ्योरी नहीं है. उसकी थ्योरी है बेसिकली ये बात जो आप बात कर रही हैं, ये थ्योरी है जेएस मिल की. बेंथम ने कहा था कि पीपल रैशनल होते हैं, एंड रैशनल मतलब वो सेल्फिश होते हैं. दे थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड दे ट्राई टू काइंड ऑफ create maximum pleasure for themselves, and they want to avoid pain for themselves. So they are selfish in nature. Or that's the only reason why state needs to make laws जो कि उनकी player maximization करें और pain को avoid करें. So that should become the guideline principles. अच्छा, purity को define करूँ जी. Purity means that जब ये क्वेश्चन पब्लिक कर दे ताकि सब बच्चों को पता चल जाए. आप लोग ने क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चों को सवाल सॉरी नहीं आ रहे होते ना समझ में, एकदम पब्लिक कर लिया करें. Purity means that a law, what are the chances that a law which is creating player will expand, will exponentially add. Now सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक लॉ ऐसा लॉ है जो कि प्लेयर क्रिएट कर रहा है, बस एक प्लेयर से बाद में मल्टीप्लिकेशन होगी, मजीद प्लेयर्स खुद ही क्रिएट होंगे, दैट काइंड ऑफ लॉ इज अ गुड लॉ. और अगर एक पेन से मल्टीपल ऑफ टाइम्स ऑफ पेन्स क्रिएट होंगे, एक पेन से मजीद पेन भी क्रिएट हो सकते हैं, देन दैट्स काइंड ऑफ बैड लॉ. दैट्स व्हाट प्योरिटी मीन्स. यस, वी हैव टू लर्न ऑल पेन्स एंड प्लेयर थ्योरी जी. सर विल यू चेक आवर असाइनमेंट्स? आई सेंट माइन 2 weeks ago. हबा, आई डोंट नो इफ आई गॉट योर मेल और नॉट, बट मैंने कुछ लोगों का जवाब दिए हैं. आई डोंट नो आप उनमें से हैं या नहीं है. अगर आप मुझे दोबारा सेंड कर दें, बिकॉज 2 weeks का मतलब आई हैव more than 100 emails afterwards. So अगर आप प्लीज मुझे दोबारा सेंड कर दें. If law initially creates pain but subsequently it results into pleasure, will it be a good law? Yes, that's true. करंट अफेयर्स की बात नहीं होती, वो इलेक्शन की बात कर रहे थे. ये ट्रम्प के जो इलेक्शन हैं उसको फॉलो करिएगा. निमिषा, मैं स्टूडेंट को इसलिए रिकमेंड ये करता हूँ, बेटर इज इफ यू सेंड इट थ्रू द कोऑर्डिनेटर, उनके थ्रू सेंड कर दें प्लीज. बिकॉज समटाइम मुझे एक दिन में मेल आती हैं 50 आ जाती हैं. सो समटाइम आई पीछे चली जाती है, बात मैं भूल जाता हूँ और मैंने कुछ जवाब दे भी देता हूँ. व्हाट इज बेनेवोलेंस एंड मेलेवोलेंस? मुस्तफा लिटरल मीनिंग है बेनेवोलेंस मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू गुड टू समबडी, एंड मेलेवोलेंस व्हेन यू ट्राई टू डू बैड टू समबडी. हमदर्दी जताना बेनेवोलेंस होती है और मेलेवोलेंस होती है. चैट ऊपर करिएगा.
Sir, a thing which creates pleasure for one can create pain for others. So what will Parliament do to survive, to surveys or what? Sajid, बड़ा important formula. One creates pleasure and others. तो अब फैक्टर देखें ना, इंटेंसिटी ऑफ पेन मेजर होगी, एक्सटेंट होगी, ड्यूरेशन होगी और प्योरिटी होगी. It can create pains in others, but how much intensified, how many people, for how long, and what are the subsequent chances? तो ये multiple factors को ध्यान में रखेगा इसी सवाल के जवाब में. Will we get past papers? ताजा past papers गूगल में मिल जाएंगे आपको. Google it out and you will find out. That's बिल्कुल आके बिल्कुल possible है. That's possible again. Does he give any mechanism to monitor all principles and properties? Properties क्यों monitor करनी है? तैमूर अभी आ रहा हूँ, सवाल ले लूँ फिर मैं आप इसके सवालों पे आ रहा हूँ, इसके मॉडर्न दौर से रेलेवेंस की बात करूँगा. पहले क्वेश्चन ले लूँ. Intensity, if a pain is created but short-lived, then what will happen? It's a good law. If a pain is short-lived, intensity की है, again ये कैलकुलेशन फार्मूला है ना, मैथमेटिकल फार्मूला है. और जब मैथमेटिकल फार्मूला होता है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स दे यू हैव टू कीप इट इन माइंड. Benevolence is relief. Benevolence is not relief. Benevolence का मतलब है when you get benevolence means doing good to somebody. सारे थोड़ा और क्या समझाना है? किस पॉइंट की बात करें? अच्छा, सिंपल सा आइडिया है साजिद. यहां पे एक चीज है, हम चीज की हर बात नहीं करते, लॉ की बात करते हैं. अल्लाह कैन क्रिएट प्लेयर्स इन सम एंड कैन पेन इन सम. लॉ ने कुछ लोगों में पेन क्रिएट किया, कुछ लोगों में प्लेयर क्रिएट किया. तो मेरा आपसे सवाल यह है, आपका सवाल बल्कि ये है कि पार्लियामेंट को कैसे पता चलेगा कि अच्छा सर्वे में साजिद आप काउंट करते हैं. अब वो यहाँ पे मेथड तो कोई नहीं बताता कि कैसे पता चलेगा, बट वो कहता है पार्लियामेंट नीड्स टू कीप इन माइंड दीज फैक्टर्स. अब वो फैक्टर्स कैसे मेजर करेगी इसकी बात साजिद वो नहीं करता, बट कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी? इंटेंसिटी, एक्सटेंट, ड्यूरेशन, प्योरिटी. इन फैक्टर्स को देखकर इट विल मेक द लॉ. हाउ विल ही इट जज के लोगों में क्या चीज चल रही है, क्या मैक्सिमम लोगों में कैसे इंपैक्ट आएगा? ही डजंट एक्सप्लेन दैट. रेफरेंडम हो, सर्वे हो, प्लेबसाइट हो, जो भी हो, बट ही डजंट गिव एनी इंडिकेटर फॉर दैट. रेमशा थ्योरी जो थी वो जनरल थी. इट वाज this theory was proposed not only to Britain, it was also for France and America and other states. Yes, good law is the law which creates pleasures and which avoids pain among the people. That's all. Let me explain its relevance with the modern times. Let me explain his relevance with the modern time. Last 4 points. Falsific calculus. Falsific calculus is to measure the law, whether it's a good law or it's a bad law. उसको measure कैसे किया जाएगा? पहला फैक्टर है intensity. If a law creates high intensity pleasures, low intensity pains, it's a good law. Intensity of pain and pleasure will also be added as a factor in deciding whether it's a good law or a bad law. Second is extent, how many people are affected by the law, whether number of people affected are more or less by pain or pleasure, that will be another factor. Third is duration, whether or not a law lasts for how long will be a factor in according to which we can measure the good and the bad law. And lastly, purity means whether a law that creates pains will create more pains or it will be only a one pain. And similarly, if a law creates pleasures but it's a one-time pleasure, or that pleasure is likely to multiply in different other forms, तो वो प्योरिटी उसको हम कहते हैं. तो ये फैक्टर्स होंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे पेन और प्लेजर का. असद
अगेन ये मैथमेटिकल है, गुड और बैड की बात नहीं है। बात यह है कि इन चारों को अलग अलग से नहीं, ये नहीं कि ये है तो बाकी है, ये नहीं है, कम्युलेटिव इंटरेस्ट है। इट्स नॉट 1 और 2 और 3 और 4, इट्स अबाउट द कलेक्टिव data that comes out of it. Who will define the duration? Everything will be determined by the parliament. पार्लियामेंट ने ला बनाना है ना, पार्लियामेंट को, ये मशवरा पार्लियामेंट को दे रहा है, पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है इन फार्मूलाज को। Hamza, if by measuring, if this is your assumption, Hamza, अब ये आपकी assumption है, measuring consequences, one shows law is good and other shows it's a bad law. It's a calculation. 2 + 2 4 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता 2 + 2 एक दफा 4 आए और एक दफा 5 आए. It has to be fixed ones. Okay, let's come to implementation. Yes. Let's come to relevance. इसकी तरफ चलते हैं. बेंथम की जो लॉ की थ्योरी, आप में से इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम लॉ? इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम लॉ? ओके, अमीर हमजा हैं. इफ देयर एनीबॉडी एल्स, बिकॉज उनसे इंटरनेशनल लॉ, वो भी तो एक लॉ ही है. ठीक है, ओके. लेट्स सी जी. अच्छा, लॉ में चाहे इंटरनेशनल लॉ हो या मॉडर्न लॉ हो, आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसमें प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इस्तेमाल होता है और नॉट? वैसे आपसे पूछ रहा हूं, व्हाई लॉज आर अमेंडेड और व्हाई लॉज आर रिपील्ड? लॉज में अमेंडमेंट और रिपील क्यों होते हैं, खत्म क्यों होते हैं? व्हेन यू डू नॉट गेट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, जब लोगों के इंटरेस्ट में ना बने लॉ, वो लॉ लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बजाय हो जाए, तो हम उसको करते, लॉ खत्म करते हैं. व्हेन दे आर नो लॉन्गर यूजफुल. सिंपल है. सो अब यहां पे एक बेसिक डिबेट ही, यही बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है. पाकिस्तान को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें कहा जाता है लॉज आर मेड इन द ऑन द बेसिस ऑफ कुरान एंड सुन्ना. तो हमारे यहाँ तो लॉ की जो बेसिस है वो है कुरान और सुन्ना, सोर्स की बेस पे है. चाहे उसका इम्पैक्ट अच्छा हो, चाहे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ जाए, वी डोंट केयर. बट बिकॉज द सोर्स ऑफ द लॉ इज गुड, देयरफॉर इट्स अ गुड लॉ. ऐसा ही है. हमने ये तय कर लिया हुआ है. तो हमारे पाकिस्तान में तो थियोरेटिकली यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन रिलीजन के अलावा जो लॉज हैं, जैसे टेररिज्म के लॉज हैं या बाकी लॉज हैं, उन पे हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी लगाते हैं. बेशक पार्लियामेंट के सबसे ईमानदार लोगों ने लॉ बनाया हो, बेशक उसका क्लू कहीं से भी लिया हो, लेकिन इफ इट सर्व्स द पीपल इट्स अ गुड लॉ, इफ इट इज नॉट इट्स अ बैड लॉ. सो दुनिया में तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिलीजन की. एनी लॉ which proves to be beneficial for the people is a good law, and which proves to be harmful to people, it's a bad law. So modern law, उसकी जो theory है, उसकी जो practice है, it is based on the principle of utility. So Bentham का सबसे बड़ा contribution अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो उसका theory of pain और pleasure नहीं है. pain और pleasure desire करते हैं इंसान, ये जरूरी नहीं होता, but उसकी जो सबसे बड़ा contribution है वो है theory of utility की, that it was the principle of utility, it is the principle of utility that is important principle and which is followed even today. Throughout the world, states make laws that create benefit for the people, and they do not make a law because of the source. किसी लॉ को सोर्स की बुनियाद पे अच्छा या बुरा लॉ नहीं कहा जाता वर्ल्ड वाइड, बल्कि उसके इम्पैक्ट्स की बुनियाद पे उसे अच्छा या बुरा लॉ कहा जाता. ये मैं बिल्कुल नहीं कहा साजिद के गुड लॉ अमेंड नहीं होगा, ये मैंने कतई नहीं कहा. व्हाट आई सेड इज द गुड लॉ इज द वन which works for the interest of people, and later on if people's interests change, the law can be changed, even that good law can be changed.
वैसे बाय द वे हमारे यहाँ एक डिबेट बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से, जिसमें लोग भी मारे जाते हैं। क्या वो लॉ चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो उसको फेवर करने वाले हैं वो कहते हैं इट्स अ लॉ, इट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पीपल, सो वी नीड टू फिल द लूप होल्स इन इट। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इट इज टेकन फ्रॉम द शरिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यू हैव लिमिटेशंस ऑन दैट। ऐसा ही है। Yes, exactly. So the classical source versus impact debate, absolutely, absolutely, basically. और उसी डिबेट को लॉ पे अप्लाई करना, that's ओके जी। आई गेस लेट्स मूव, चलते हैं आगे जी। ठीक करें मैकडेलिक, प्रोसीजरल लॉ होता है, प्रोसीजरल प्रोसेस और प्रोसीजरल और चीज हो जाएगी। यहां तो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्रोसीजरल की बात नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली नॉट उमर, कोई एग्जांपल नहीं। थिंकर में मैंने एग्जांपल नहीं देनी। रेलेवेंस का मैंने एक ही पॉइंट बताया था, उसकी थियरी ऑफ यूटिलिटी। मैंने कहा उसका जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है जी, दैट इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड, in most of the states follow the principle of utility while making most of their laws. अच्छा, इसके एग्जांपल अगर आपने लिखनी हो यूरोप में से कोई एग्जांपल दे दें, कोई एग्जांपल दे दीजिएगा। जब एक लॉ बनता है तो क्या लोगों से ओपिनियन लिया जाता है? जो ऊपर सर्वे की बात कर रहे थे साजिद, समटाइम्स दे टेक सर्वेज, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स दे टेक सर्वेज फ्रॉम द पीपल। ठीक है, whether this law will but people think that this law will have a positive impact on them or a negative impact on them. Sometimes you try to measure that कि impact कैसे आएगा। Sometimes states are sure, parliaments are sure कि कैसा impact होगा, और sometimes they are not sure कि कैसा impact होगा। So if they are not, then they go to the public और उनसे पूछ लेते हैं। That's true, Amir Abza, true. Brexit, exactly. Indirect surveys and true. Anyway, let's move जी। अच्छा, now we'll move towards the Muslim thinkers. मुस्लिम थिंकर्स पे जरा जाएंगे। जी किरण, एग्जैक्टली। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद अल मवारदी, देन वी विल गो टू अल फराबी, देन गजाली एंड इब्न खल्दून। ये चार हम करेंगे। इलामा इकबाल हमने करना है, लेकिन उसको जाके पेपर 2 के साथ करेंगे। पेपर 2 के जाके हमने दो थिंकर करने हैं, एक मॉन्टेस करना है और एक इलामा इकबाल करना है। जब पेपर 2 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर उनकी बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे अल मवारदी से, देन विल मूव टुवर्ड्स अल फराबी, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स इब्न खल्दून, एंड देन इलामा इकबाल। इनमें सबसे इमाम गजाली भी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इब्न खल्दून है, बट ऑब्वियसली बात है, और उनकी फिलोसफी है प्रॉपर। और उसके बाद जो मवारदी, फराबी, खल्दून, गजाली और इकबाल, ये 5 मुस्लिम थिंकर हमने करने हैं। इनमें से इलामा इकबाल आखिर में जा करेंगे, बट बाकी थिंकर में से फराबी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम कर लेंगे उसको। और मवारदी भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। गजाली, खल्दून और इकबाल, उन पे अक्सर, और खासकर खल्दून और इकबाल पे तो सवाल बहुत दफ़ा आता है सब। मरियम, अदर थिंकर्स, आप उनकी बाकी थिंकर्स की किताबों के नाम और उनकी थ्योरी के नाम आपको आने चाहिए, बस, दैट्स इट। आई डोंट नो रिदा, यू हैव टू काउंट फॉर योरसेल्फ। नंबर मुझे नहीं याद कि कितने हैं मुस्लिम थिंकर में, हमें 7-8 हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट रफली अराउंड 8 के करीब होंगे। ओके, और अगेन बाकी जो रिमेनिंग थिंकर्स हैं, आपने उनका क्या करना है, उनकी बुक्स के नाम और वो करें। जज़ीब 11 मुस्लिम थिंकर, अच्छा, आर यू श्योर? वो एक नाम रिपीट हुआ हुआ है जज़ीब, एक नाम रिपीट हुआ हुआ है उसके अंदर। No, Aisha, I won't recommend that. I won't recommend that. जी, थिंकर का सेम प्रोसीजर है। हेगल का क्या साथ? मैंने भी क्वेश्चन किया।
हेगल का? इट्स 11, ओके 11, लेकिन एक नाम रिपीट हो गया। अच्छा, व्हेन विल वी स्टडी हिम, उसका पूछा गया है हेगल को। हेगल को हम स्टडी करेंगे जी बिल्कुल लास्ट में जाके, बट अगर आपने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया हुआ है, कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिक पढ़ लिया हुआ है, बेंथम बिकम्स इजी, वो आसान हो जाएगा। इसलिए मवारदी पढ़ेंगे तो गजाली आसान हो जाएगा। तो ये ओवरलैप कर रहे होते हैं चीजें। अच्छा, नोट्स ऑन मुस्लिम थिंकर्स, साथ जो मवारदी हैं और इमाम गजाली हैं, ये आपको मज़ल हक की जो बुक मैंने सेंड की हुई है ग्रुप, आपको मिली होगी ग्रुप, उसमें मज़ल हक की बुक से आप करेंगे। मवारदी और जो दूसरे हैं गजाली, ये आप वहां से करेंगे। दो थिंकर पीछे बचेंगे, फाराबी और इब्न खल्दून, उनकी सॉफ्टवेयर मैं दूंगा आपको। इज इट क्लियर सर? नहीं, जिनके पास मेरी बुक है उसमें तो सारी है ना, मेरी, मैं तो बुक अलग से बात करूँ, मेरी बुक में तो अलग से पढ़ूंगा, मैं तो बाकी की बात करूँ। मेरी बुक जो है वो गाइडेड है ना सारी, वो तो गाइड है। दैट्स आल्सो गुड बुक मानूर, इट्स अ गुड बुक, उसमें वेस्टर्न भी है मुस्लिम भी है। सो यू हैव टू रिमेंबर, बाकियों की बुक्स के नाम आपने याद रखते हैं जी, और उनकी थीरीज के नाम याद रखते हैं। एनीहो, शुड वी मूव? यस किंजर। ओके, Mawardi was born in 972 and he died in 1058. डेट ऑफ बर्थ और डेथ कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज इसको। 972 and he died 1058 AD. ओके, ग्रेट। अच्छा, मवारदी के ऊपर आसान थेरी है, 30 मिनट्स में हो जानी है, कवर हो जानी है। मवारदी वॉज बॉर्न इन, अच्छा इसका बाकी सारे पैटर्न हुए होंगे, हम बायोग्राफी करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट करेंगे, आपने पेपर में भी उसी तरह अटेम्प्ट करना है, टेक्निक्स भी वही हैं, इट्स एवरीथिंग द सेम वे। मवारदी वॉज बॉर्न इन बसरा, बसरा में पैदा हुए, इराक के अंदर। लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू बगदाद, बट in his early childhood he got his basic education, particularly the religious education, at his home. So shuru ki jo education thi he got from his own home. Actually he belonged to a religiously powerful and influential family. Uski jo family thi, it was known family, a well respected family of the time. So he got his basic religious education. अच्छा, basic religious education ये होती है, कुरान, फिक्का, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है। कुरान पाक इज़ लर्न बाय हार्ट, और साथ में फ़िक्का और शरिया की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं बेसिकली बेसिक एज के अंदर, अर्ली एज के अंदर। सो आफ्टर गेटिंग हिज बेसिक एजुकेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही मूव्ड टू बगदाद, वो बगदाद चले गए फॉर हायर लर्निंग, फॉर हायर एजुकेशन। In Baghdad, Mawardi studied fiqh and Sharia. Fiqh क्या होता है? What is fiqh? Laws, exactly. Fiqh is the laws. Fiqh Islamic jurisprudence भी इसको हम कहते हैं sort of, और शरिया जो है broad principles आ जाएंगे। So the point is, Mawardi got his higher degrees in, he completed different courses on the fiqh as well as Sharia. He was an expert into Islamic laws and Islamic religion and Islamic philosophy. Achha, after completing his education, he started teaching the same in Baghdad. उसने बगदाद में ही टीचिंग शुरू कर दी। He started teaching and writing on the principles of fiqh and Sharia. Later on, he was appointed as a judge. उनको as a judge भी appoint किया गया, and he was offered the post of the chief judge in Baghdad.
उन्हें पौधा मिला नहीं, उन्हें ऑफर की गई दैट यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज द चीफ जज, जिसको अरबिक में कहते हैं काजील कुज़ाद, काजील कुज़ाद. So Qazil Quzad was the post that he was offered, but he refused to accept that. Cut the story short, जो उसकी जितनी जिंदगी है, almost all of his life, he spent at different positions. वो टीचिंग करते रहे और साथ में एज अ काजी या जज के तौर पर भी रहे. Although he never accepted the post of Qazil Quzad, and he spent most of his life teaching and acting as an Islamic expert as well as the judge. ये उनकी बेसिक लाइफ है जी. उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी किताबें लिखी. मोस्ट ऑफ मवारदीज वर्क इज इन फिका एंड शरिया, बट जो हम पॉलिटिकल सेंस में उसकी किताब पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अल अहकामुल सुल्तानिया. अल अहकामुल सुल्तानिया. Al-Ahkamul Sultaniya is the name of his book, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं. Is it clear? तो 2-3 टेकअवेज हैं. आलिम थे, एज अ जज उनको ऑफर हुई पोस्ट की, एज अ टीचर पढ़ाते रहे, बसरा में पैदा हुए, और आखिरी चीज़ है अल-अहकामुल सुल्तानिया. और वो जो अहकामुल सुल्तानिया किताब है उनकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब होगा अल-अहकामुल सुल्तानिया का? He remained judge for a short period of time. Yes, the rule of the state, laws of the state, जो भी है, लिटरली मतलब सुल्तान का कमांड होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो लिटरल सेंस है, रूल ऑफ स्टेट होता है, गवर्नेंस ऑफ स्टेट की बात करते हैं. यस, लेट्स नाउ सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट से पहले इसमें सवाल क्या आता है? यूजुअली द क्वेश्चन ऑन मवारदी इज हिज थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत. थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामेट, या इमाम भी कह सकते हैं या इमामेट कहते हैं. जैसे खलीफा से खिलाफत है तो इमाम से इमामेट है. इट इज़ इंटरचेंजेबल टर्म. ये इंटरचेंजेबल टर्म है, खिलाफत और इमामत दोनों में से कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन में खिलाफत हो तो खिलाफत करें, इमाम हो तो इमाम करें, जो भी टर्म लिखी हो उसके. लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट. क्यों दी उन्होंने थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमाम? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई बताएगा ये इस टाइम पीरियड पे मुसलमानों की हुकूमत किस डायनेस्टी के पास थी? बनु उमय्यद थे, अब्बासिड्स थे, फातिमिय्यद थे, सल्जूक्स थे, कौन थे? एनीबॉडी? अब्बासिड्स का टाइम है जी. ये अब्बासिड्स का टाइम है. बनु अब्बास जिसको हम कहते हैं, दे वर द रूलर्स एट दैट टाइम. ABBASIDS, अब्बासिड्स. नाउ यस, ट्रू. अच्छा, अब्बासिड्स का जो टाइम था ये वाला 972 ऑनवर्ड्स, इस टाइम पे, और हमें पता है कि जो मवारदी हैं वो कैपिटल में रह रहे थे. दे वर लिविंग इन द कैपिटल. नाउ प्रॉब्लम वाज when Mawardi was living at that time, it was a period of decline of Abbasids. Abbasids का डिक्लाइन था, और उनके डिक्लाइन में एक बड़ा फैक्टर था the threats posed to the खलीफा. उसके डिक्लाइन की वजह थी डिफरेंट थ्रेट्स. और वो थ्रेट्स क्या थे? There were 3 main security threats to खिलाफत at the time of al-Mawardi. One, the threat of Fatimids from Egypt. Shiite tribes थे इजिप्ट के अंदर, जहां से फियर था that they might invade and capture खिलाफत in Baghdad. Second was the fear of Seljuks coming from Turkey. It was feared that Seljuks might also capture खिलाफत. Fear था वहां पे. Third was the fear of the Shiite tribes who were living outside Baghdad.
मैं तीनों रिपीट करता हूँ. पहला थ्रेट था फतमिय्यत्स का इजिप्ट से, सेकंड था सल्जूक्स का फ्रॉम टर्की, एंड thirdly was the Shiite tribes who were living in the suburbs of Baghdad. बगदाद के सबब्स में जो शियाई ट्राइब्स थे जिनको नाम देता है बुवाहिद्स, शायद स्पेलिंग होंगे BUWAHID, बुवाहिद्स. So बुवाहिद जो शियाई ट्राइब्स थे, they were also getting powerful and Khalifa was getting weaker. So external threats as well as internal threats, they were weakening the Khilafat. ये तो बात तय हो गई. इजिप्ट से फतमिय्यत्स हसन. अच्छा, अब मसला ये था दैट मवारदी थ्रू मंगोल यहां से नहीं थे, मंगोल तो सेंट्रल एशिया से आए थे. मैं 2 दफा रिपीट किया, अब तीसरी दफा रिपीट करूं जी, मुझे प्राइवेट मैसेज आई जा रहे हैं. पहले थ्रेट मैंने कहा आपको, फर्स्ट वाज कमिंग फ्रॉम फतमिय्यत्स थ्रू इजिप्ट, सेकंड वाज फ्रॉम सल्जूक्स इन टर्की, एंड थर्ड वाज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कैपिटल बगदाद, यानी स्टेट के अंदर ही, कैपिटल से बाहर जिसको हम कहते हैं बवाहिद्स, और उनका भी एक थ्रेट था. शियाइट ट्राइब्स थे. कोई फतमिय्यत किस पर लिखते? आई डोंट थिंक मैप की जरूरत है यहां पर. चलो, एनीवे, नाउ द पॉइंट इज 3 मेन थ्रेट्स की बात की गई. The 3 main threats were here. Now, Mawardi, because he was an advisor to the Khalifa, he was living in Baghdad, he was giving advices to Khalifa on religious affairs. Therefore, through his theory of Khilafat or Imam, Mawardi tried to protect and preserve the Khalifa. Through his theory, he wanted to protect the authority and the powers of the Khalifa. Threat से fear ये था खिलाफत खत्म हो जाएगी. गनवा, सॉरी, आई डोंट हैव गुड मैप्स, मुझे नहीं आइडिया होता, और ना पेपर में मैप बनाना है आप लोगों ने. मेरा मैप इतना बुरा है कि आप लोगों ने परेशान हो जाना है. मैप से समझ आने के बजाय आप लोगों को कंफ्यूज हो जाना है. वो इट्स इजी फॉर यू साजिद, बट मेरे लिए मुश्किल है. प्लीज, तो इसलिए मुझसे ना कहा करें मैप का, मैं बहुत भागता हूँ मैप से. सॉरी, बट आप देख लीजिएगा गूगल में. यस, नहीं बना सकते. द बेसिक एम ऑफ हिज थ्योरी ऑफ खिलाफत वाज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द खलीफा इन बगदाद. नहीं, इस पेपर में वेस्टर्न, मैंने आपको फिलॉसफी में मैप बनाएंगे तो बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा. नेवर डू दैट. और मेरा मैप कितना बुरा है मुझे पता है, आप लोगों का जितना मैप अच्छा है वो भी मुझे पता है. वैसे बात है गनवा, आप मुझे कुछ ना कहें, मेरा तो बुरा है ही है. एनीवे, दैट्स माय सो वीक पॉइंट. मेरे हमेशा बचपन में सबसे कम मार्क्स ड्राइंग में आते रहे, सबसे कम मार्क्स. एनीवे, बट स्टिल वापस आते हैं इस पे. उसको खतरा ये था कि बाहर से हमलावर आएंगे, इंटरनल होंगे, और वो क्या करेंगे, खलीफा को हटा देंगे. खलीफा वीक है, अब वो चाहता है कि खलीफा रहे. आई एम सॉरी, बट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम थिंकर्स रोड टू प्लीज खलीफाज. खलीफा का नाम मुझे नहीं याद बनी वैसे में कौन था, बट रशीद में से कोई होगा, शायद मामून रशीद होगा या हारून रशीद होगा, समवेयर अराउंड दैट. बट point is, the philosophy of al-Mawardi is to protect and preserve the caliph. उसको protection और उसकी preservation के लिए थी सर. That's why he gave the theory. Is it clear? अगर खतरात ना होते खलीफा को, उसकी theory ना आ रही होती. It's a basic idea. Is it clear? मुझे कमेंट कीजिएगा कॉन्टेक्स्ट पे.
Okay, let's move. Let's go to the theory. Mawardi begins his theory of Khilafat by explaining different qualifications. Who can be a Khalifa? Mawardi provides different qualifications. Let me explain 7 different qualifications that Mawardi gives. Mawardi 7 qualifications की बात करता है और उन 7 qualifications को हम देखते हैं. 1, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा, उसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं, एक लाइन में लिख लीजिएगा. विजडम, करेज, ब्रेवरी, नॉलेज. विजडम, ब्रेवरी, करेज, नॉलेज, और नॉलेज से मतलब रिलीजियस नॉलेज है. 5th is integration of physical senses. इंटीग्रेशन मतलब इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल सेंसेस. अच्छा, अब फिजिकल सेंसेस से क्या मतलब है? एनीबॉडी? नहीं, सिर्फ पागल ही नहीं है. इट्स अबाउट फिजिकल सेंसेस से मतलब ये है कि उसकी विजन ठीक हो, समाज ठीक हो, बेसिक सेंसेस ठीक काम करी हो, या स्टेट, स्मेल, टच एक्सेट्रा, ये चीज़ें काम करती हैं उसकी. एग्जैक्टली टेस्ट, स्मेल वाली चीज़ें आ जाएंगी सर. आवाज़ से खमसा, चलें ये ठीक है. यस, 5 सेंसेस उसकी काम कर रही हैं, और ख़ासकर उसमें आई साइट की बात कर रहा है और हियरिंग वगैरह की बात कर रहा है. अच्छा, नेक्स्ट आप 6th पॉइंट बनेगा. इज इट 6th पॉइंट? छठा पॉइंट है, ही मस्ट हैव इंटेग्रिटी ऑफ ऑर्गन्स. He must have the integrity of organs. यानी उसके हाथ, पैर, कान, नाक, गला सब कुछ सलामत हो, टांगे वगैरह सब कुछ सलामत हो, और उसके साथ ठीक अटैच भी हो बॉडी के साथ और ठीक काम भी कर रहे हो. डिसेबल ना हो, आसान लफ्ज़ में. यस, नो फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए. एंड लास्टली ही सेज that the Khalifa must belong to Quraysh. He must be the descendants of Quraysh. बनु कुरैश से हो. अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, अगर बनु कुरैश से होगा, क्या सल्जूक बन सकते हैं खलीफा? नहीं. तो उसने, मैं एक दफा सारी रिपीट करता हूं जी नाम: विजडम, ब्रेवरी, करेज, नॉलेज, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल सेंसेस, इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गन्स, एंड ही बिलोंग टू क्रैश. एब्सोल्युटली ज़ायदा, थैंक यू फॉर सर. नो रिलीजियस क्वालिटी, मैंने इनमें से एक रिलीजियस क्वालिटी बताई है, कोई बताएगा मुझे भाई? इन 7 में से एक रिलीजियस चीज भी है, और वो कौन सी है? नॉलेज. एग्जैक्टली, नॉलेज क्या हो? इस्लामी इल्म हो उसके पास. दैट्स अ क्वालिफिकेशन. Let's now move towards, after qualifications, move towards his appointment. कैसे अपॉइंट किया जाता है या किया जाए खलीफा को? मवारदी प्रोवाइड्स 2 मेन मेथड्स ऑफ द अपॉइंटमेंट. 2 मेथड्स हैं. He says Imam can be, Khalifa or Imam can be elected, or he can be selected. He can be elected or he can be selected. Election में 2 मेथड हैं. Mawardi says that an Imam can be elected by the people of capital. अभी आ रहे हैं, मरियो सी पर आ जाएगा. वो इलेक्शन कैसे कहता है? वो कहता है सारे लोग नहीं, नॉट ऑल पीपल, बट दोज हु आर इन कैपिटल,
only they can elect खलीफा। अच्छा, आप बनु कुरैश से हो और फिर साथ कह रहे कि लोग जो है वो इलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इलेक्शन तो कर सकते हैं लोग, लेकिन इलेक्शन किसी को नहीं भी कर सकते, तो एक डिस्क्वालिफिकेशन है इफ यू आर फ्रॉम कुरैश। इट्स नॉट कंट्राडिक्टरी बट इट्स वियर्ड एंड स्ट्रेंज और अनडेमोक्रेटिक, बट हम इसको कंट्राडिक्टरी कहना शायद मुनासिब नहीं होगा लफ्ज। नाउ द imam can be elected by the people of the capital city, or imam can be elected by a shura consisting of 5 to 6 people। 5 से 6 लोग हों और उस शूरा में 5 से 6 लोग, they can choose any one from among themselves as खलीफा। आपस में ही किसी एक को वो खलीफा बना सकते हैं या इमाम बना सकते हैं। एंड लास्टली an imam can be elected and selected, और इमाम को सेलेक्ट कौन करेगा? आर्मी चीफ सेलेक्ट करेगा। That imam can be selected by the outgoing imam। आउटगोइंग इमाम जो है वो सेलेक्ट करेगा। वी को मुझे देने आ रहे हैं या मुझे लेने आ रहे हैं? आई थिंक सो। रूलिंग इमाम, द एग्जिस्टिंग इमाम विल चूज हिज सक्सेसर, वो चूज करेगा। नॉर्दर्न एरियाज की सैर होगी फॉरम, सही बात। एनीवे, 3 यानी अगर आप बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेथड आ जाते हैं। इलेक्शन, सिलेक्शन। इलेक्शन में फिर 2 मेथड, कैपिटल सिटी शूरा, और सिलेक्शन में आउटगोइंग इमाम। अच्छा, वैसे आप जरा आप पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो ये जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाद एक टर्म होती है इलेक्टोरल कॉलेज। हैव यू हर्ड दिस टर्म इलेक्टोरल कॉलेज? अच्छा, अब ज्यादा बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है, कैपिटल वाला या शूरा वाला? यस, कैपिटल। कैपिटल में ज्यादा लोग होंगे, कैपिटल में ज्यादा लोग होंगे, सो मींस वो जो साइज ऑफ द पीपल इन कैपिटल इज एक्चुअली मोर देन द शूरा। शूरा जो है वो क्या है, इट्स 5 or 6 पीपल। कैपिटल में देयर बी मोर पीपल। कैन बी मेड बट ही डिड नॉट से इट ना, तो हम उसको कहेंगे नहीं, उसने जो कहा हम वही बात करेंगे। अच्छा, एक बार फिर रिपीट करूं, इमाम कैन बी इलेक्टेड बाय कैपिटल पीपल ऑफ कैपिटल सिटी और बाय शूरा, और इमाम कैन बी सिलेक्टेड बाय द आउटगोइंग इमाम। वो टाइटल खलीफा भी इस्तेमाल करता है, वो टाइटल इमाम भी इस्तेमाल करता है, इंटरचेंजेबली जी, दोनों कर सकते हैं। हनीफा का सवाल, कैन द रूलिंग इमाम नॉमिनेट अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन फैमिली? अच्छा, ओनली इफ ही फुलफिल्स दीज क्वालिफिकेशंस। अगर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करेगा तो अपनी फैमिली में से किसी को चूज नहीं कर सकता। दैट्स अ सिंपल आइडिया। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, एग्जैक्टली साजिद सी बात हूं, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस ही सेज दैट दीज आर द मेथड्स that he did not propose, these are the methods that were adopted by the first 4 caliphs। पहले 4 जो caliphs हैं, पहले जो फर्स्ट 4 caliphs हैं, उन्होंने यही मेथड यूज किया था। माजी ने पूछा इफ ओनली फ्रॉम बनु कुरैश वरंट द ऑप्शन बी फैमिली। असल में बनु कुरैश इज अ ट्राइब मारिया, नॉट द फैमिली। बनु कुरैश के अंदर देयर आर मल्टीपल फैमिलीज, ठीक है, तो इसलिए जो है वो फैमिली का लफ्ज समझ गए। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विल बी the tribe, not the family. Family is different. Anyway, now the first 4 caliphs exactly, जो पहले 4 caliphs हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी इन्हीं में से कोई मेथड के तहत हुई थी। लेट मी एक्सप्लेन जी, बताइएगा।